How many research papers have you downloaded this week? 10, 20, or maybe 50? Now, let me ask you a question. जितने भी पेपर आपके पास हैं, उन पेपर्स में से एक्चुअली आपकी रिसर्च के लिए बेस्ट फिट पेपर्स कौन से हैं? क्या आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो? द प्रॉब्लम इज बहुत सारे स्कॉलर्स सिर्फ इसीलिए स्ट्रगल नहीं करते बिकॉज उनको राइट पेपर नहीं मिलता. वो इसीलिए स्ट्रगल करते हैं बिकॉज वो राइट पेपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. दैट्स वाई दे वेस्ट वीक्स रीडिंग पेपर्स विद नो वैल्यू. Hello everyone, welcome back to episode 3 of Literature Mastery series. I am Dr. Surbhi Acharya, founder of Sunraj Education. In episode number 1, हमने सीखा literature review is not about reading papers. It is about extracting insights. In episode number 2, हमने सीखा paper read करने से पहले clarity build करना जरूरी है. And in episode number 3, we are going to understand how to find relevant research papers for your research. Papers जो आपको help करेंगे to understand existing knowledge, identifying patterns, discovering research gaps, and building the conceptual framework. Today in this video, you will be understanding everything regarding how to research papers, ऐसे frameworks जो Oxford University में भी use हो रहे हैं. The biggest mistake that usually scholars are doing, they are only and only researching their papers by using keywords. या फिर सिर्फ अपना topic add किया Google Scholar पे and identifying papers. If you are also doing this, then stop. Instead of searching your research from topic, start searching from a purpose. Start searching and understanding why it is important, what it will give, and how I'm going to identify the patterns. A topic will always give you information, whereas a question or a purpose will give your research a direction. And the quality of your research is always determined by the depth of the research papers. So, अगर better research papers ढूंढने हैं, so instead of only and only submitting your topic, start with questions, start understanding your research. And that's when you build a foundation for relevant research for your topic. आपकी लिटरेचर रिव्यू की क्वालिटी बहुत पहले सेट हो जाती है इवन बिफोर यू आर सर्चिंग फॉर योर फर्स्ट रिसर्च पेपर एंड दैट इज वेयर मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स आर फेलिंग बिकॉज वी आर नॉट बिल्डिंग एनी फाउंडेशन. वी आर ओनली एंड ओनली जगलिंग बिटवीन क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है. एंड इस पिक्चर को और ज्यादा क्लियर करने के लिए वी हैव आवर इन हाउस फ्रेमवर्क दैट वी कॉल एज द Sunraj LS framework. The Sunraj LS framework will going to help you to understand the one very basic question, where I should research to what exactly I should research. The moment you become clear in your research, that is the moment your research is already in one line direction. And now let's understand the framework. S stands for search objective. Before reading any paper, decide what you are looking for. A theory, a framework, any recent studies, methodology, or a research gap. A. Academic keywords. Now find the keywords that researchers will use. Open 5 to 10 highly cited papers related to your topic. N. Narrow keywords. Now run initial search using your own keywords. उसके बाद results को देखो. R. Research database. Search the same keyword across multiple databases. Do not stop after the first database. Compare result, save relevant papers, and use database filter to remove irrelevant studies. A. Assess relevance. हर पेपर को एटलीस्ट 2 से 3 मिनट स्क्रीन करो. टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन. देन आस्क, क्या ये पेपर मुझे मेरा लिटरेचर रिव्यू, फ्रेमवर्क, मेथडोलॉजी या फिर रिसर्च गैप बिल्ड करने में हेल्प करेगा? अगर आंसर नो है तो उसको इमीडिएटली डिस्कार्ड कर दो. जे. जज क्वालिटी. जितने भी पेपर स्क्रीनिंग के बाद सरवाइव करे हैं उनकी क्वालिटी असेसमेंट करो. Evaluate them on the basis of the quality. Journal की reputation, citation count, research design, data analysis and publication paper. Then rank the paper.
Read the highest quality and most relevant papers first. This way, instead of reading 100 papers, you will only have to read 15 to 20 papers that actually contribute to your study. And that is how Sanraj LS framework will going to help you understand your research better and extract the most relevant papers for yourself. 6 steps and 5 minutes and you are done with weeks of work. मैंने आपको ये तो बताया कि सनराज एलएस फ्रेमवर्क से पेपर्स को ढूंढना कैसे है. नाउ लेट मी टेल यू पेपर्स को कहाँ कहाँ ढूंढना है. द आंसर इज वेरी सिंपल. डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स सर्व डिफरेंट पर्पस. स्कॉलर सबसे बड़ी गलती बस यही करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे मुझे सारा कुछ मिल जाएगा. आई एम गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड किस लेवल पे कौन सा रिसर्च इंजन आपके लिए बेटर इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट करेगा. लेवल 1 गूगल स्कॉलर पे जाओ. यूज गूगल स्कॉलर व्हेन यू वांट टू एक्सप्लोर अ न्यू टॉपिक, find foundational study, track citations, understand what's already being published. Level 2, go to Scopus. Use Scopus when you want high quality journal article, reliable indexing, better filtering options, bibliometric and trend analysis. जब आपको क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी की जरूरत है, उस टाइम पे यूज वेब ऑफ साइंस. Web of Science is especially useful for systematic review, citation analysis, highly influential paper, and evidence-based papers. Level 4, ResearchGate. Now let's say you found the perfect paper, but it's behind a paywall. So try ResearchGate. ResearchGate often upload full text version of their publication there. It is a great place to connect with authors, request papers directly, and discover ongoing and emerging research. Level number 5, AI-powered literature review. Instead of manually searching multiple databases, AI-powered tool can help you identify relevant papers much faster. Successful literature reviews are not built by reading more papers. They are built by reading and identifying quality papers. And here is my 5-paper rule that will help you save weeks of your hard work. Before reading 50 papers, read these 5 papers strategically. Paper number 1, most cited paper. Paper number 2, the most recent paper. Paper 3, a systematic review. Paper 4, a meta-analysis. Paper 5, the paper closest to your topic. This will always work. These 5 papers will often teach you more than reading 30 random articles. So even before you are reading your first paper or even before you are extracting any information, apply this 5-paper reading rule that will help you extract better insights. 5-paper rule पढ़ने के बाद you need to understand whether the papers are best for your research or not. Then ask these questions. आपका गोल बहुत ज़्यादा पेपर पढ़ना नहीं बल्कि राइट, इन्फ्लुएंशियल और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टिंग पेपर होना चाहिए. तो अगर आप ये समझ जाओ कि पेपर ढूंढने कौन से डेटाबेस से है, उसके बाद किस टाइप के पेपर्स पहले आपको ढूंढने हैं और वो पेपर ढूंढने के बाद किस तरीके से क्वेश्चन के बेसिस पर उनको असेस करना है, then it will become very very easy for you to understand the complete journey. And to help you with this, I have added all these steps with some Sanraj funnels into a PDF. Comment Sanraj funnel and I'll be sharing the PDF with you. देखो पेपर ढूंढना जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन सही पेपर ढूंढना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट. We are conducting a 3-day workshop on how to identify relevant research papers and how to construct the literature review. Comment workshop and I'll be sharing all the details with you. I hope this video gave you insights about पेपर पढ़ने से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और पेपर्स को ढूंढना कैसे है. In episode number 4, we will be talking about ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको रिसर्च पेपर से एक्सट्रैक्ट करनी है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके पेपर को और आपकी रिसर्च को डेप्थ प्रोवाइड करेगी. So don't miss out the next episode and press the bell icon so जब भी हमारी न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. If you like this video, subscribe to our channel, comment, like and share this with your peer group. I'll be meeting you in next video. Till then, take care. Bye bye.